Hello everyone, this is Dr. Aditya Gupta. So today is 5th of October, AIMS, INICET or AIMS or whatever you want to call it is on 5th of November. 1 month is left, and so I wanted to make this video specifically on what are the important things that you have to remember and what makes INICET specifically different from NEET PG and how you can utilize it to get a better rank, either if you are preparing specifically for INICET in November or if you are preparing for NEET PG but you are giving this on the way कि जो टेस्ट करके देख लेते हैं to boost your confidence, to know your preparation, कितने पानी में हो like they call it in Hindi, to know that. Now first most important thing that you have to realize as far as INI is concerned, that their focus is much more on first and second prof as compared to final prof. Like they tend to ask way more questions on pathology, pharmacology, microbiology than let's say from medicine. In fact, most of the medicine of AIMS can actually be covered if your pathology and pharmacology are decent enough. The second thing that you have to remember, and this is something which I've told in so many of my videos, you're not preparing for the exam, you're preparing to be able to revise in the last 7 to 10 days before the exam. If your last 7 to 10 day revision is perfect, no one can stop you from getting a top 500 rank. I can give it to you in writing. No one else can give, I can give you. If your last 10 to 10 day revision is done in a proper systematic manner with all the previous year question and all the previous year topics being thoroughly revised, no one can stop a top 500 rank. Absolutely no one. The reason I'm saying top 500 not top 100 is because obviously there is a small exam day variability, but otherwise no one can stop. Agar पिछले 7 to 10 years के previous year question and previous year topics are on your tips and you're able to revise in the last 7 to 10 days, no one can stop you. Another very specific thing about November as compared to May INICETs, this is an AIMS, this is the exam which an AIMS interns gives for the first time. And now this might sound कि थोड़ा prefer कर रहे हैं अपने AIMS interns को, but इस attempt में ना थोड़े internship specific questions tend to come a bit more. So this exam will have more, let's say, trauma related question, more emergency related question than the May exam. This is something which you can keep at the back of your mind, and कि थोड़ा internship related चीज़ें, the things that we used to normally do in an internship, cannula कैसे डालना है, कौन सी ट्यूब किस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट होती है, right? Things like that, they tend, or biomedical waste management, these things tend to get asked more in November, while immunity and थोड़े random topics which are INI specific tend to get asked more in May. This is one thing that you have to remember. But the most important thing I'm going to tell you is, I've already told first and second prof carry way more weightage as final prof. Let's look at it. अगर मैं तुमसे बोलूँ you have just 1 day or 2 days to complete a subject, these are subjects which can be done in 1 and 2 days. Forensic medicine करनी है या ENT करनी है? You know you will say कि सर forensic medicine करेंगे. If I ask you anesthesia do या psychiatry, I know you will say sir psychiatry करनी है. Derma versus radio, all these are 2 day subjects. You will say sir I'll give 2 days to dermatology. Why? Why do you know this answer? You know this answer because by going through the past 5 to 10 year papers, you know कि यार psychiatry से 5 question पूछते हैं, anesthesia से तो कभी-कभी 1 question भी नहीं पूछते. You know that sir FMT से तो 8 से 10 question पूछ लेते हैं, despite it being a very small subject, despite it being a very easy subject, जबकि ENT कभी-कभी बहुत tough है, ये तो समझ में भी नहीं आता, but they tend to ask only 2 to 3 question, especially as far as INI is concerned. You know that derma will have 5 question and only you need to do Nina Khanna images from dermatology, and radio से शायद 1 या 2 question ही आए. This thing is not only valid for subjects, this thing is valid even for topics, especially as far as INI is concerned. Within subjects also, there are certain very important topics that are asked again and again, and you won't know it till the time you have solved previous year questions, till the time you know what previous year questions are, and obviously those important topics. I know a lot of people are spreading this fake बकवास कर रहे हैं that previous year question करने से exam नहीं निकलता. भाई exam previous year question करने से ही निकलता है. And obviously you have to do, you cannot just remember and rectify those PYQs. उससे exam नहीं निकलेगा. मैं खुद बोलूँगा कि अगर तुम सिर्फ 1000 previous year question रट के चले जाओगे, उनके आंसर रट के चलोगे, exam नहीं निकलेगा. But उनसे understand करोगे that this thing is more important, this thing is less important, this thing I tend to forget and it is important, so I'll revise in the last 7 days. उससे exam निकलेगा. पूरे 100 घंटे, 150 घंटे, 1000 घंटे पढ़ के रिवाइज तो बिल्कुल ही भूल जाओ, उनसे एग्जाम नहीं निकलने वाला. सो इन दिस 1 month, फोकस योर एनर्जी ऑन द इंपॉर्टेंट हाई यील्ड टॉपिक्स दैट आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन, especially in the last 7 to 10 days. Obviously your knowledge and obviously your concept should be clear in order to understand those important topics in the first place. But if you spend your energy on things which are not important, no exam is going to get cleared. This is the specific reason I created the Reflex. I think a lot of you know about this, that I created the app Reflex. It's a PYQ only app. This में subject wise past 10 years, अब तो 10 भी नहीं actually, past 12 years के AIMS के papers दिए हुए हैं, subject wise, topic wise, कि आज let's say you are going to revise pathology in 2 to 3 days. Today I did general pathology, hematology and immunology. You can do these topic wise. No other app has them sorted out topic wise. Yes, they have
पेपर वाइज, आइदर पेपर वाइज होंगे, जो बुक्स होंगी वो भी पेपर वाइज होंगी, बट हम लोग प्रिपरेशन तो टॉपिक वाइज कर रहे होते हैं. दैट्स वाई रिफ्लेक्स हैज़ एन एडेड एडवांटेज. Obviously the other advantage is 600 rupees. You know, it's probably one of the cheapest, probably one of the best 600 rupees that you will ever spend in life. But मैं अपना मुँह में मिट्ठू क्यों ज़्यादा बनूँ? I'll invite now Dr. Rishi Sharma. Rishi is other Rishi यार. Rishi is someone who got a 13,000 rank. He got 13,000 rank in NEET PG 2023. In 1 month, while preparing for AIMS May INI-CET May, he used Reflex. एंड क्योंकि उसने स्पेसिफिकली INI स्पेसिफिक नॉलेज की कमी नहीं थी. 13,000 इज अ डिसेंट रैंक, लेट मी बी वेरी क्लियर, मिड रैंक है जिसको हम कह रहे होते हैं. बट उसने उस 1300 रैंक को 1200 रैंक में कन्वर्ट कर दिया, कन्वर्टेड दैट रैंक इनटू 1200 इन जस्ट 1.5 months फ्रॉम नीट PG टू May by specifically doing INI-CET specific topics, by specifically doing INI-CET previous year questions. So मैं चला जाऊंगा. Rishi will tell you कि in the next 1 month how you can use Reflex. And I would urge everyone to use Reflex. अगर तुम टॉपर भी हो, तुमने बहुत अच्छे से कोई ऐप करी भी हो, then still I'll ask you कि यार एम्स के 14, 15, 16 के पेपर से भी ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और वो सिमिलर टॉपिक्स रिपीट हो जाते हैं. उनको देने के लिए भी 600 रुपीज़ वोंट बी समथिंग टू मच फॉर यू गाइस. इफ़ यू आर समवन ऑलरेडी इन द टॉप 100, 200 GTs में स्कोर अच्छे हैं, इट वोंट हार्म यू. बट अदरवाइज ऑल्सो इफ यू आर लेट्स से गोइंग टू गिव नीट PG GT की तरह देने वाले हो या फिर specifically prepare कर रहे हो, I think Rishi, someone who has actually used it, can better tell you how to use Reflex for that तुम्हारी एम्स के अंदर, इस एग्जाम के अंदर रैंक वो 10x शूट अप हो जाए. Rishi, over to you. Thank you, sir. Hi, I am Dr. Rishi. I have done my UG from GMC Azamgarh from Uttar Pradesh. It's a very new college. So actually, like in my UG, I have not read that much because of lack of faculty and everything. So I started reading from different coaching institutes, obviously, from final year. So I try to read as much as I can, as much as I try to understand. But I gave my first exam in 2021. Actually, I'm from 2015 batch. I got a 95,000 rank. The next exam I gave was last year May. NEET PG. That time I got 95,000 rank. So that time I realized कि like सब पढ़ के like 700 घंटे की वीडियो देख के जो भी 18-20 हज़ार क्वेश्चन करके I cannot revise. Like there may be some sets of people who can do this. Thanks to you. Like अच्छा कर लेते हो आप लोग, मैं तो नहीं कर सकता और मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो नहीं कर सकते. I think a majority of the people won't be able to. They might be able to do it also, but they won't be able to revise it. The revising problem is that's why the Reflex has come into the picture. So, like I got a rank of 4,000 in November last year, and I got 13,000. Like I prepared very well, but the problem which was lacking in my NEET PG this year in March was that I was not able to revise it in the last 10-15 days, whatsoever you can say, because you tend to get lost in those days. So you should have some anchor. So I like tried to read, I could not revise. I got 13,000 rank, but I was like shattered. I prepared for very good rank, but then I picked up myself. I took up Reflex. So what I knew was I cannot do 8,000 questions, so for sure. So at that point of time, I don't know by luck or whatsoever, sir knew something or what, like उन्होंने 2 tags introduce किए, AIMS और NEET PG. So I just took my chance. I just did NEET PG, AIMS PY questions. I made custom modules. I did those. पहले अभी कभी ऐसा लगता है कि माइक्रो इतनी बड़ी है, पता नहीं कहाँ से क्वेश्चन आते हैं. I'll tell you, I did micro 3 times at least. I taught my batchmates. I made them revise X. I made them revise cycles. You go to micro, you'll see, you will find cycles. You will find those vectors, and I have a note of like 10 pages which I tend to revise when I get lost. कि आज 1 घंटा पढ़ना माइक्रो तो ये पढ़ना है. How do I know that? Because I'm doing PYQs. I know कि ये टॉपिक आता है, इसको पढ़ना है. ये टॉपिक बार पूछ रहा है, इसको नहीं पढ़ना है. तो हमें पता है कि अगर हमारे पास टाइम नहीं है तो हमें क्या नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट. क्या करना है उसके सब लोग कुछ ना कुछ बता रहे हैं आपको, क्या नहीं करना है इंपॉर्टेंट है. तो दैट थिंग यू टेंड टू नो कि आपका एक पेज है, उसमें से 2 लाइन से क्वेश्चन आता है, 2 लाइन पढ़ना है अपने को अगर 1 घंटे के लिए पढ़ रहे हैं तो. सो आई एक्चुअली डिड AIMS PYQ क्वेश्चंस इन द लास्ट 1.5 months and I revised in the last 10 days also. और when I tend to get lost, I make custom modules and I suggest you custom module बनाओ, 70 मिनट में 100 क्वेश्चन करो, 0.7 per second का टारगेट लेके चलो. That is important because of your speed, like that builds up your speed. Or plus
लाइक दिस इज ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दिस यू नो कि ये आता ही है एग्जाम में, ये एग्जाम का ही क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कोई रैंडम क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो व्हाट ऋषि डिड वाज कि सिर्फ हमारे यू कैन मेक कस्टम मॉड्यूल्स, कस्टम टेस्ट इन आवर ऐप, कस्टम टेस्ट में जाओ, वहाँ पे लिख दो सिर्फ एम्स पीवाईक्यूज, माइक्रो एम्स पीवाईक्यूज। उसने वो किए, उसने रियलाइज किया यही पूछते हैं, उसको उसके 10 पन्ने के नोट्स बना दिए। एडिशनली मेरे को माइक्रो पूरा पढ़ने का टाइम नहीं है, मेरे को पढ़ना ही नहीं, मैं बोर हो जाएगा, मैं माइक्रो जाएगा जनरल माइक्रो का, एम्स जनरल माइक्रो, बस 50 क्वेश्चन माइक्रो करने हैं, दैट्स इट। यू कैन डू इट टॉपिक वाइज ऑल्सो, कि तुम कस्टम टेस्ट में गए, टॉपिक चूज किया माइक्रो के अंदर, यू नो जनरल माइक्रो या बैक्टीरिया और एम्स पीवाईक्यूज ओनली, 50 क्वेश्चन का टेस्ट बनाया, तुम्हें पता है ये 50 क्वेश्चन एम्स से पूछे। बैक्टीरिया में आते हैं, क्यों डरना है बैक्टीरिया से, नहीं पढ़ना है मुझे पूरा बैक्टीरिया। रिकेट्शिया से बार बार वो रिकेट्शिया का टेबल बार यू नो वो फर्स्ट एड में दिया हुआ है। कोई फर्स्ट एड कहेगा कि फर्स्ट एड बहुत प्रमोट कर रहा हूँ, पर वो फर्स्ट एड का जो टेबल है ना रिकेट्शिया का, वही क्वेश्चन आता है यार, आता ही तुम बार बार देखोगे। एंड आई टेल यू व्हाई दे आस्क दैट क्वेश्चन, दे आल्सो नो दैट यू आर गोइंग टू गेट कंफ्यूज्ड इन दैट टेबल, दे आल्सो नो तुम्हें याद नहीं रहेगा एंड मोमेंट पे OX2 क्या होता है, OX19 कौन सा होता है, व्हील फेलिक्स होता है, क्या होता है, देख मैं आप खुद बोल रहा हूँ, व्हील फेलिक्स रिएक्शन होता है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ अब हो भी नहीं, मेरे को याद नहीं आता, ठीक है, बट दैट्स अ पॉइंट, वी टेंड, even no matter how much I've read it earlier, we'll tend to forget unless we revise in the last 7 to 10 days. So if you're preparing for AIMS specifically this November or giving it as GT, 3 approaches कर सकते हो। पहली, GTs की तरह दे दो, specifically if you're a topper, I'll say कि हर third day if you're already getting top 300 400 rank, उसको top 10-20 के लिए boost करना है। हर third day एक AIMS का from reflex, एक एम्स का पेपर जीटी की तरह दे दो। द सेकेंड वे यू कैन यूज इट इज कि यू कैन कीप ऑन रिवाइजिंग एंड सॉल्विंग पीवाईक्यू टॉपिक वाइज। तुम अपना नीट पीजी के लिए पढ़ते रहो, टॉपिक वाइज एम्स पीवाईक्यूज, एम्स कस्टम टेस्ट बना के जैसे ऋषि ने किया वो करते रहो। ट्रस्ट मी, एटलीस्ट व्हाट विल हैपन, योर रैंक इज गोइंग टू गेट बूस्टेड बाय डूइंग दिस इन द लास्ट 1 month. It will at least give you the confidence while going in for NEET PG. And I have an addition to give. One of my friend got like this, even like 20,000 rank, but she has told me that she did reflex. She just wanted 10 years ka question paper. Like she got 35,000 rank, but she's like, she has just read PYQ. Whatsoever her knowledge was, just PYQ. Some things happened, she couldn't revise. Situations were not good. But the point is, if someone is doing just PYQs, even once getting 30,000 rank, next time if you read it properly, read it thoroughly, then revise in the last 10 days, I think you can shoot up. Basically what he's trying to say कि सिर्फ PYQs, ऑब्वियसली वी ऑल नो कि सिर्फ PYQs करने से नहीं होने वाला, तुम्हें वो टॉपिक पूरा का पूरा पढ़ना है। बट व्हाट ही इज टेलिंग यू, क्योंकि सिर्फ PYQs भी करोगे ना तो भी 20-30,000 रैंक आ जाती है। उनको ढंग से, उन टॉपिक्स को ढंग से कर लोगे तो ऋषि की तरह 1200 रैंक आ जाएगी। MBBS ढंग से पढ़ी होगी वो 1212 हो जाएगी। यही है फंडा। फनल डाउन करते रहो, इतना सारा जो मटेरियल है फनल डाउन करते रहो टू समथिंग विच यू कैन रिवाइज इन लास्ट 7 to 10 days, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, PYQ टॉपिक्स, एंड यू विल क्रैक द एग्जाम। That's it from my side today. Thank you, Navadai. Thank you, Rishi. Thank you. Thank you.